और जैसे ही मैं अपडेट का बटन दबाऊं तो मेरी जो वैल्यूज हैं MongoDB में जो सेव हुई हैं वो अपडेट हो जाएं. So let's go to the Visual Studio Code, and what we need to do is we are going to edit profile. And before moving forward, I would like to show you how did I rendered values in the fields of the front end. So I have created a function named as set values, and I have just called this function right here. So basically this first line is actually to set the value of the gender. The second line is to select the value of the day, month and year. And this function is called automatically because I have just called right it here. So whenever the page is loaded, the values is sets automatically. So यहाँ पर मैंने जो फ्रंट एंड पर वैल्यूज को रेंडर करवाया और मेरी तमाम वैल्यूज सेट करवाई हैं वो इस फंक्शन के थ्रू करवाई हैं. जेंडर की वैल्यू जो मैंने सर्वर से सेंड की थी उसको रेडियो बटन में असाइन करवा दिया. डे, मंथ और ईयर की वैल्यूज को भी मैंने उस ड्रॉप डाउन के अंदर सेव करवा दिया और यहाँ पर मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर लिया सेट वैल्यूज के फंक्शन को. सो इस तरह से जैसे ही ये पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज सेट हो जाएंगी. अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर हमारा एक बटन लगा हुआ है अपडेट. ठीक है, ये बटन जैसे ही क्लिक हो तो हमारे पास जो से फॉर्म्स के अंदर वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जानी चाहिए. सो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक मेथड यूज किया पोस्ट और उस पर एक्शन परफॉर्म किया अपडेट प्रोफाइल. So what we are going to do is there is a button named as update, and I have made a method named as post, and an action on this button is update profile. So whenever a person presses the button update, so it will pass all the data to the post method, and the action which is at its back is update profile. So we have to create a route for it. We are going to the index and we are going to write router dot post update profile. So I'm just going back and copy it from right here. And on this hit, I want to execute a function named as update profile. So now what we need to do is we have to go to the controller and write the code of update profile. So यहाँ पर मैंने router के अंदर एक route बना ली है post की और कह दिया कि जब भी ये update profile की कॉल आएगी तो क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम होगा अपडेट प्रोफाइल. ठीक है, अब हम कंट्रोलर में जाकर ये फंक्शन लिखते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कोड, पेस्टिंग इट, अपडेट प्रोफाइल. And now what we need to do is we need to write the code of updation right here in this block. So I'm just going to paste the code which I have written before. So this is the code, and what is actually happening in this code, let's discuss that. I'm going to maintain a session because I don't want a user to interfere unless he is logged in into the account. So basically यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि एक सेशन मेंटेन कर रहा हूँ ताकि जब यूजर लॉग्ड इन है तभी वो इसको एक्सेस कर सके, वरना वो उसको एक्सेस ना कर सके. ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, हम ये करें कि यहाँ पर हमने एक यूजर स्कीमा बनाया हुआ है जो कि हमारे पास पूरी डेटाबेस का पड़ा हुआ है. हमारे पास डेटाबेस का जो रेफरेंस पड़ा हुआ है, हम क्या करने वाले हैं उसके अंदर हम क्यूरी लगाने वाले हैं ईमेल पर और चेक करने वाले हैं कि क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करती है. सो बेसिकली क्योंकि वो लॉगिन होकर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ईमेल एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन हमने यहाँ चेक्स लगा दिए. उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि तमाम वैल्यूज जो यूजर ने पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें सेंड की हैं, ठीक है, जो कि हमारे रिक्वेस्ट के अंदर आई हुई हैं, हमने उन सब वैल्यूज को गेट किया. गेट करने के बाद हमने क्या किया कि उसको हमने जो यूजर था यूजर डॉट सेव के फंक्शन के थ्रू सेव करवा दिया. अब क्रिएट के फंक्शन के अंदर और अपडेट के फंक्शन के अंदर डिफरेंस ये है कि क्रिएट के फंक्शन के अंदर हम एक न्यू यूजर बनाते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि पुराना यूजर जो हमें डेटाबेस के अंदर से मिला था उसी के ऊपर हमने फंक्शन कॉल की डॉट सेव. और सेव करवाने के बाद हमने क्या किया कि इसको रीडायरेक्ट करवा दिया प्रोफाइल पर. ठीक है, सो जो भी अपडेशन हुई होगी वो हमें प्रोफाइल पर शो हो जाएंगी. So basically what we have done in this if condition is that we are just matching the email address which we have saved in our session with the emails which are saved in our MongoDB, and we are just fetching the user from our MongoDB. So if the user exists,
we will make variables and set the values in the variables which we have get from the request. So basically the user has used the post method, so we have all the values which the user have saved in the form, and all the values are accessible through request. So basically what I'm doing is, for example, in the case of username, I'm saying user.firstname is equal to request.body.firstname. Basically the name which was written by the user in the website is accessible to me right here. So I just copy this value and move this value into the user dot first name. So the value, so after this instruction, the value of the user first name is actually the value which the user has entered in the form. So in the same way, I just set the value of all the variables, and then I just call a function dot save to save all the values in the database. But what's the difference in create and update? So basically in create, what we were doing was creating all the variables and then making a new user, and after that we were calling a save function on that new user. But now we are doing is updating the value of the variables of that user and then calling the save function on that particular user which we have found from the database. So in this way we are performing the update operation, and if the data has successfully been updated in the database, then what steps we are doing is we are saving the value of email. For example, our user has changed the email, then we need to change the email which we have saved in our session. And after that what we are doing is we are redirecting the person or the client to the profile. So basically we are doing a post request and sending the user to the profile. So यहाँ पर हमने क्या किया कि जो अपडेट का फंक्शन हमने लिखा हुआ है जिसके अंदर ये जो सेव का फंक्शन है, इसके अंदर अपडेट करने के बाद अगर हमारी अपडेट हो जाती है तो यहाँ पर हमने जो सेशन मेंटेन किया था और सेशन की ईमेल थी उसको भी चेंज किया, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र ने अपनी ईमेल अपडेट की हो। सो अगर उसने ईमेल को अपडेट किया है तो हमें जो सेशन के अंदर ईमेल रखी है उसको भी तो चेंज करना है ना। सो हमने उसको भी चेंज कर लिया, ठीक है। इन केस के अगर उसने ईमेल चेंज की होगी तो सही है, और अगर नहीं की होगी तो ये काम रिडंडेंट हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी जो डेटा हमारा डेटा है वो अपडेट हो रहा है या नहीं। सो लेट्स गो टू द लोकल होस्ट and check it out that either the changes are being saved or not. So usama@usama.com and the password is 1. So the account has been opened. Now I'm going to edit profile and going to change the email from usama@usama.com to usama@zen.com. So finally I'm going to press the update button and you can see there's an error. This error occurs because we have not saved our routes. So I'm going to save all and then checking it once again. So localhost 302 usama@usama.com and edit, and then usama@zen.com and updating it. So basically you can see right here that the name is Usama Maqsood, but the email has been changed and it is written as usama@zen.com, and we can test it or check it, verify it from the database that the email has been changed as usama@usama.com. सो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे MongoDB में से भी और यहाँ से भी कि हमारी जो ईमेल है वो अपडेट हो चुकी है। सो इसी तरह हम एडिट प्रोफाइल के अंदर जाकर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और वो चेंज हमें डेटाबेस के अंदर नज़र आएगी। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें। So if you have any further queries, you can comment in the comment box. Subscribe to our channel Teach Me Technically and give this video a thumbs up. Thanks for watching, friends.